So what you should do, right? You have to search with a keyword like GitHub Deepak 2717, right? Over the uh, Google. So you might get some output like this, right? In this you will, right, see my URL, right? You can click over it, you will land up to this page, and in this page, right, uh, you can click over here at the top corner, right? There is a fork button, you can see, right? If you click here, right, it will do what? It will clone your entire my entire repo as your project, right, as your repository in your account. So this will happen. Okay, Yeah. so this is what you should do, right, for doing right projects yourself. For any project I have, you can, right, look into my repository. There are many such projects which would be very helpful in terms of learning Jenkins. Okay. Okay, now I will move to our main topic. First of all, have you gone through uh, this pipeline thing? I told you, right, to explore something around declarative pipeline and scriptive pipeline. Anyone want to put some broader highlights? So, Well, yeah. I read something about it. The one of them is performed on different nodes that you Mhm, told us, mhm. and one is the entire agents all something like that. I didn't understand the coding perspective of it, but Okay. No, not an issue, but you, if you have done some exercise, that would be that is great, right? At least you started with. So yes. obviously I'm here to, right, help you understand them, right? And also we will perform lab and you will understand how easy that stuff is, right? For example, to understand a difference, right, you can say scripty pipeline is from old school, and right, declarative pipeline is modern. Now, when this is the stuff we had discussed something about when learning Maven. Also, I talked or used a word called imperative approach and declarative approach. Right. So Hmm. imperative approach is what, like spoon feeding, right? Telling, right, what to do, right? What all action items to be do, right? So in scriptive, it is more like that. You write your own script, right? And this script run as a job, which will do all the things. You can use plugins and other things also while writing. The same thing you can also achieve, right? Using declarative pipeline, which is modern. Only thing is, it is a modern approach, or you can say in a way, right? It is much more opinionated. So when I say this, the structure they have written is well defined than the scripted pipeline. They have some extra features, and which actually segregates and give, right, this declarative pipeline an edge over, you can say, scripted pipeline. So, for example, what are the difference and what are the important things that you should understand? For example, the very first thing that I will point out about the differences, or at least a technicality, we can say, it is like validation at the startup. You know, when I say validation at the startup, what does it mean? Can anyone think when I read this, write this, right? You can say sentence validation at the startup. So, what this specific sentence will mean? Will the initial health check that every system is present or something like that? Basically, if you remember, in case of Maven also, it starts with a validation. It Yes, looks, yes. right, rather than starting directly. First, it sees, okay, it has something missing, so it will fail at that moment only, right? Rather than it will start some action first and then, right, for example, compilation करने के बाद उसको error मिला, right, Uh-huh. library नहीं मिला, तो क्या करता है, पहले validation करता है, उसके बाद करता है. Same here, right? In this case also, uh, I'm writing right now an example of declarative pipeline. So first of all, it also uses a DSL, which is a general purpose DSL, and we call it Groovy, right? It's kind of a Groovy scripting, and you don't need to learn Groovy script for that. First of all, right? Keep in your mind. If you're interested, you can learn. But to write this pipeline, you don't need to write. You just need to know the structure well. So the keyword that you will use for declarative pipeline should be pipeline. Okay? But in case of scripted pipeline, it should be node, not
right pipeline. This is the very first visible difference you can say, but not what I'm talking in terms of technicality. Now pipeline uses agent, right, as a keyword, which is not there where, which is not there in scripted pipeline. So agent could be like, for example, I want to use Docker, I want to use a certain virtual machine, right, I want to use certain node, right, I want to use you can say some node container. So agent could be right anything. And if you put agent any, so it will mean what, it can carry work on any agent. Generally if you want to use a specific agent, agent means what, where your heavy lifting will happen. For example, you want to Sorry compile to some. interrupt, Deepak. Yeah. Someone is waiting in the lobby. Okay, okay. I will keep that open here. Okay. So I told you, right, for example, I want to use a container to do certain, right, compilation or build activity, and right, for that a container is there with all the right environment specific thing. So I can use a specific container called Docker. For example, I want to do something over Tomcat, so I can use right agent as a right Tomcat to do something. So I will get a pre-installed environment in which I can work. So this is where a agent is very purposeful. While in Node, it will always need a node, right, where it will do the right execution, the right node, or you can say scripted pipeline. So this is one thing, right, that you should be aware of. Okay. Now here we define stages. Okay. So this stages means what? What would stages mean, guys? For example, when you did the Maven project, are there any stages you can right think in that? क्या stages थे उसमें? Somewhere we are doing git fetch, uh, right? yes. Then we are doing compilation, right? Right. Hmm. Then we are The doing testing. testing, right? Yes. Then Then we are doing packaging, packaging, right? Then we are doing deployment. So these install. are stages, right? So there they have already defined it, but in pipeline we can right define our stages. Okay, and in these stages we define what actual stage. So obviously stages would have subset called stage. So in stages, for example, I define stage, and I can give stage some name. For example, I can write compile, right, I will do a compilation, or I can instead use word like build, right. So this is the name which will depict in the pipeline, right, which is a very graphical right way of showing you what is happening in the stage. So that is what where this name will be useful, which will be right presented to you, right, when pipeline runs. So now in this build you want to mention what you want to achieve, basically, right, what you are going to do. For example, it would have what? Steps. Steps is where, right, actual workload or actions are written. Steps contains what? Actual actions. Okay. So action is like what? क्या करोगे अगर मेरे को बिल्ड करना है कोड को, तो मैं क्या लिखूंगा? सबसे पहले होता मैं एक इको स्टेटमेंट डालूंगा, है ना, राइट, कंपाइलिंग द कोड, ठीक है। उसके बाद मैं हो सकता है सीधा sh शेल कमांड रन कर दूं, राइट। इसमें मैं टाइप कर दूं maven sh minus c जनरली, ओके, maven clean, राइट, डिप्लॉय और पैकेज वट एवर, बट ये गलत होगा ना, मैं बिल्ड स्टेट कंपाइल के लिए लिख रहा हूँ बिल्ड, और मैं डिप्लॉय डाल रहा हूँ। यहाँ पे क्या होना चाहिए? कंपाइल। तो ये दोनों काम करेगा क्या? वैलिडेशन एंड कंपाइलेशन, करेक्ट, दैट इज व्हाट मेवन राइट दस। सो मैंने एक स्टेप एक स्टेज लिखा, उसमें ये एक्शन है, तो ये एक्शन परफॉर्म होगा स्टेज में, नथिंग एल्स। Now, after that, I can have multiple stages as per my need, right? So I can have stage called test. Okay. Then I can have you can understand what should I write in write this particular stage. Can anyone tell me what I will write? I can which action I can write here? Maven test. Correct, Maven.
test. So this is right. Currently I am doing all the stuff which is related to right developer lifecycle one, right? So for example, I did this and did sh minus c, right? Maven clean test. Deepak, this is the standard way to write this code, or I This mean, is, yeah, this is a standard way. Okay. And yeah, Deepak, this will run on the Jenkins machine, right? Yeah, Or if we can so, specifically say it can run on another machine or something like that. if you see, right, I spoke about this, Agent any, yes. right? So when agent any, right, and you're not specifying something, it will use what? The host machine, Typical Jenkins Jenkins machine. way of doing it, right? तो Okay. आपने अगर स्लेव नोड ऐड किए हैं, राइट, और आप Mm-hmm. पाइपलाइन जॉब में रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो, तो नहीं तो मैक्सिमम किस पे रन होगा? ये जेंकिंस नोड पे ही रन होगा, ठीक है? Okay. अगर Okay. मैं इसको डॉकर बोल दूं एजेंट को, Mm-hmm. है ना, तो क्या करेगा? एक इमेज पुल करेगा, है ना, उस इमेज में हाँ रन हाँ करेगा सब हाँ. कुछ, ठीक है, और जेंकिंस को देगा, ठीक है? दिस इज ओके, एक्चुअली आई वाज थिंकिंग कि हमारे एनवायरनमेंट्स तो अलग अलग होते हैं. टेस्ट का एनवायरनमेंट अलग होता है, डेवलपमेंट का मतलब प्रोडक्शन का अलग होता है, डेवलपमेंट का अलग होता है. तो ये रन करते वक्त हम लोग कहीं किसी स्पेसिफिक एनवायरनमेंट पे रन करेंगे या कैसे सो करेंगे? वो अलग चीज है जो आप बोल रहे हो ना, इन्वायरमेंट स्पेसिफिक रन, वो कौन हैंडल करेगा? वो आपका एग्जीक्यूशन हैंडल करेगा ना. फॉर हाँ एग्जांपल हाँ अभी मैं क्या कर रहा हूँ? मैं डेवलपर का बिल्ड लाइफ साइकिल ही ऑटोमेट कर रहा हूँ, है ना. हाँ मतलब हाँ. मैं 4 बनाऊंगा, मान लो टेस्ट के बाद में मैं जस्ट थोड़ा सा टेम्पलेटिंग लिख रहा हूँ, ठीक है. तो ओके मान ओके, हाँ, लो, तो ये बिफोर नेक्सस है. यस यस राइट, अभी हाँ अभी हाँ तक हाँ हाँ. हमने ओके, डिप्लॉय किया अंडरस्टैंड. ही नहीं है ना, अभी तक हाँ हाँ हमने हाँ, डिप्लॉय अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड. किया ही नहीं. अभी यस. जैसे ही मैं यहाँ पे स्टेज करूंगा, ठीक है, यहाँ पे एक और स्टेज लिख देता हूँ मैं, ठीक है, और ये टेम्पलेट करता हूँ, इसका नाम मैं रख देता हूँ से डिप्लॉय, या पैकेज डिप्लॉय का पार्ट ही है, तो मैं सीधा का सीधा डिप्लॉय कर रहा हूँ, ठीक है. अभी ये डिप्लॉय जब मैं लिख रहा हूँ, है ना, तो मैं इस डिप्लॉय में बताऊंगा कि मैं भाई कहाँ डिप्लॉय करूंगा, करेक्ट. I can use what? Some Ansible or something, right? To Ansible command I can put, or some configuration management tool command I can right keep in the deploy part. Okay, and as per that it will get deployed in my defined environment. क्योंकि Ansible को क्या चाहिए होगा? Inventory चाहिए होगा. Inventory क्या होता है? Inventory होता है आपके environment का detail, machine का detail, right? उस पे जो भी पैकेज बनेगा वो उस environment में जाके deploy कर देगा. Correct. So I can in steps can use any configuration management tool, right? So I can use any CMT. Typically, I'm writing two examples. Say, for example, either you will be using Terraform or Ansible commands here, right? okay, for that Ansible deployment, then we need to use that manage plug instruments to use that plugins to. You can use plugin, or you can typically, right, if you are running a node, right, you means you will be have to install Ansible in your Jenkins. So your Jenkins is may act like an Ansible master. Okay, or you can use a plugin, and you have to define that plugin right here in the stage also. Okay, the plugin definition, what plugin feature it gives, and you can use the host name and everything, right, so that it will connect to that machine, right, and use Ansible command or execute Ansible command from there. Because your Ansible needs what? A playbook. You know what is playbook? It's like an infrastructure as Yeah, a yeah, code. Okay. I read it. Yeah. So you can use either Ansible or Terraform command, right? So this is nothing but more on the integration side, right? You will. Similarly, you can have after this, right, deploy stage, you can have feature test stage, right? You Yes. can have right staging stage. So in that way, you can right manipulate this particular right pipeline a bit. So it can be extended right after writing all the stage. So this is how. But my main intention, right, if I copy this. So in industry, we need to write this code or this kind of stuff from the scratch, or we already available and we just need to So do some modification. mainly it's available, but see, you can say right. The expectation would be right. You would be writing also yourself. For example, for any project which is right from writing, you are dealing from scratch. If you have resources right from other projects, you can copy right that thing right and use it. Generally, mainly right, it's a Jenkins file we call it, right.
if the name with the Jenkins file, it is stored in your code repository. This pipeline code would be inside Jenkins file. So that Jenkins file, right, can be copied or identified, right, if you can search. But it is right not limited to that कि आप copy paste करके modify करो, आप खुद भी write कर सकते हो ना, अगर आपको पता है, कोई बड़ी चीज नहीं है, आपको बस स्ट्रक्चर देखो, आपने ये स्ट्रक्चर याद रखना है ना, पाइपलाइन के अंदर स्टेजेस के अंदर स्टेप्स, राइट, और इस तरीके से आप मेंटेन करना है, ठीक है। नाउ अब मैं जब इस पे आता हूँ स्क्रिप्टिव पाइपलाइन पे, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कोई पाइपलाइन कीवर्ड नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है, नोड रहता है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे स्टेजेस नहीं रहता है, यहाँ पे सीधा क्या रहता है, स्टेज रहता है। यू डोंट नीड एजेंट ऑल्सो, स्टेजेस रहता है एंड स्टेज रहता है। ये मास्टर नोड पे मतलब रन होता है या मतलब ऑल मास्टर नोड पे, इस केस में हमेशा राइट मास्टर नोड और वर्कर जो भी स्लेव नोड है राइट, उस पे रन होगा, ठीक है। इन केस ऑफ नोड तो हमेशा उसको वही नोड मिलने वाला है, या आप स्पेसिफाई कर सकते हो आपका स्लेव नोड राइट, कि स्लेव नोड पे रन होना चाहिए, ठीक है। तो ये इस तरीके से स्क्रिप्टिव पाइपलाइन हम प्लेस करते हैं, क्योंकि मैं स्क्रिप्टिव पाइपलाइन जब जॉब बनाऊंगा जहाँ पे मैं स्क्रिप्टिव पाइपलाइन, मैं वहाँ पे मेंशन रेस्ट्रिक्ट कर सकता हूँ ना कि सिर्फ स्लेव नोड पे रन हो, उसके लिए वो नोड है। सो नोड इज ऑलवेज राइट वर्चुअल मशीन और a bare metal machine right in which it will run. So if I want to use docker or something, right, I have to use steps command to achieve that, right, in some or other way in this case. Now let's come to the very first point that I want to pass is validation at the startup, right. Now if say I write some statement like echo one here, okay. Now what will happen right in this case, for example here also echo one, generally echo one string echo commands always need a string right to run as per that right, this is right the groovy right generally looks into that, and this is a kind of an error. So in case of you can say the which pipeline, this is the declarative pipeline, right. So in case of the declarative pipeline, what will happen, it will validate, it will not run, right, it will fail at validation, it will see right and intimate you that there is an error, right, and it will give you details of error, but it will not execute the stages. But in case of scripted pipeline, it will start right, first it will start build का काम हुआ, उसके बाद जब stage test पे आएगा तब जाके fail होगा. You got my point? Yes or no? Yes. So this is one thing right that you have to talk about. अगर कभी भी किसी ने पूछा, this is one of the major right important right technical. Now second like, things, yes please. It's like pre-compiled declarative. You can say yeah, pre-validation or right after validation the activity will happen, okay. Second is restart from stage. For example whatever reason validation सही रहा लेकिन मेरा कुछ due to certain network or whatever reason right ये इस stage पे fail हो गया, so I don't need to start again right from the build stage, I can restart from what, test stage, okay. You got my point? Hello, you got my point? No, can you please repeat again? So I am saying कि अगर मेरा ये इस स्टेज में फेल हो जाता है राइट, Okay. इस स्टेज में फेल हो जाता है तो मुझे जरूरी नहीं है कि मैं वापस से बिल्ड स्टेज से स्टार्ट करूं, आई कैन री-ट्रिगर फ्रॉम द टेस्ट स्टेज. Okay. But in case of node that feature is not there, every time it has to start from the very first stage. Is this clear? यस बट दीपक इन दैट केस ये चेंजेस जो कुछ भी होते हैं प्रीवियस स्टेज में वो रोल बैक होते हैं क्या डिस्क्रिप्टिव के लिए? मतलब आप क्या बोल रहे हो कि ओके सो जो पहले जो चीजें हो गई हैं हाँ वो हाँ पूरा हाँ क्लीन अप करता है क्या? नहीं हाँ हाँ नहीं नहीं होता ओके वो, ठीक है। जनरली जो आर्टिफैक्ट्स हैं वो पड़े रहते हैं राइट, ओवरराइट हो जाते हैं, ठीक है। अगर ओवरराइट नहीं हो सकता तो आपको क्लीन करना पड़ेगा, ठीक है। ओके दिस इज मतलब वो एक टास्क एडिशनल टास्क बन जाता है वो यस यस गार्बेज क्लीनिंग काइंड ऑफ। गार्बेज क्लीनिंग, इसीलिए जैसे मैंने मैवन क्लीन कमांड लिखा है राइट, वैसा कुछ आपको करना पड़ेगा,
ठीक है. Okay. अगर कोई दूसरा कोड यूज कर रहे हो, राइट, rather than Maven you are using something else, right, you are running Python related stuff, right, then yes, you have to, right, clean up any right, lockable files and everything, right, that need to be taken care in your script, right, that you Yes, will put yes. in stages. Either stage में आपको डालना पड़ेगा कि वापस से रन हो तो वो clean करे, ठीक है. Okay. Okay, so these are the two major differences, I would say. Also, one thing, right? There is one thing that is given in uh, basically, you can say, the declarative pipeline about skipping, right, of a particular stage, which is not there in, you can say, the scriptive pipeline. So there is a keyword called when, right, which is you can write, for example, test I want to do when the environment is right good. So I can write above steps, I can have a keyword called when. It's like a condition statement, right? So in when, okay, I can have something called environment, okay, and I say if environment matches, right, with this value, for example, name should be dev, okay, right, and the value should be dev. तो ये मैच करेगा, राइट, इन दोनों को, जो वैल्यू आप मान लो कहीं से कैलकुलेट करते हो, वेरिएबल, राइट, ये कराते हो, और इस तरह का आपने कंडीशन डाला, ठीक है. तो अगर नेम और वैल्यू मैच करेंगे तो ही टेस्ट रन होगा, नहीं तो ये स्किप हो जाएगा, ठीक है. सो कंडीशनल एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेजेस कैन बी हैपन, राइट, सो कैन राइट, राइट, skipping a stage, right, is possible in declarative pipeline. Okay. सो ऑब्वियसली यहाँ पे मैच नहीं करेगा, और जब मैं रन करूंगा मान लो तो क्या होगा, ये मेरा स्किप हो जाएगा, सिर्फ बिल्ड और डिप्लॉय चलेगा, राइट, इट विल बाईपास टेस्ट. वो जाएगा टेस्ट पे, व्हेन कंडीशन डालेगा, बट ऑब्वियसली वो कंडीशन फेल हुआ. अगर मैच करेगा तो ऑब्वियसली इट विल एग्जीक्यूट, गो टू स्टेप्स एंड डू. You got this differences, guys, what I mean to pass on? Deepak, environment name is a keyword for the in the Jenkins. तो environment name means अपना job का name check करेगा या फिर specific. So this is one example I have given, right? Okay. So मेरा टेस्ट most related to environment होता है, right? मैं यूनिट टेस्टिंग कर रहा हूँ तो डेव में कर रहा हूँ, है ना. मेरा कंडीशन ये भी हो सकता है कि यहाँ पे कि टूल का वर्जन ये है कि नहीं है जिससे मैं यूनिट टेस्ट कर रहा हूँ, है ना, वो भी कंडीशन हो सकता है, तभी मेरा Yes. टेस्ट चलना चाहिए, नहीं तो आई शुड स्किप इट बिकॉज वो फेल हो जाएगा. तो environment is in what environment, right, you are validating it. Okay. Yes. Okay. Okay, so now let's jump into, right, this practical session, actually implementing a pipeline job. Okay, so I have a pipeline job. Even this hello world Maven can be executed as a pipeline. So first we will do this hello world Maven pipeline, and then we will do one more project that I have. Let me open it in new tab, and I will show you one more in which we will do some Docker related stuff. It's a that is a front end code, right, basically. So not Docker demo, is Tomcat Docker war, right, this one. So I will show you how the Jenkins file look like in this case. So this is our declarative pipeline, right, Jenkins pipeline. And here, see what I am doing. I'm using a plugin. Example of plugin is also here in this example. So this is my pipeline. I'm using agent as any, right? I'm using stages. In stages, I am using stage build, okay? And I'm doing Maven clean compile, and I'm using a typical Maven which I have integrated, right? This is my version of Maven, which is in global tool configuration. So I need a plugin, right, which has this function. So I have to install Maven pipeline integration plugin, which is not there, right? So if you don't install, it will fail. Your pipeline will fail. That you don't know this keyword with Maven, right?
So this example does build, test, and right deploy. So deploy in what Nexus we can do, right, using this deploy, because this is going to use my pom.xml, and pom.xml would have right that integration with your Nexus. So obviously my so same thing which I achieved from a Maven project using pipeline, I can, right. So I'm keeping it in what my source code, right? In source code, I'm keeping it. Now, second example, right, of this is deploying a front end code. Okay, here I am doing in a different way, right? So I'm doing what? I'm first compiling the code, okay, and I'm using the command line. So this command is getting executed in Jenkins, right? And it's doing Maven compile. I can use that plugin way also. Unit test, okay, and then I'm doing a package. And once my package is done, see, I'm using Docker, and I'm building image using a Docker file, and naming that Docker image as Deepak Tomcat, because in this I am going to deploy my code, and give it right for testing, or right in production I can ship my containerized image. So मैं front end इसमें डाल रहा हूँ, और उसके बाद मैं इसको शिप करूंगा. अब मैंने डिप्लॉय टू स्टेजिंग करके एक इन्वायरमेंट लिखा है, तो मैंने इसको डॉकर से किया है, जैसे मैंने आपको बोला था एनसिबल से कर सकते. एंड इसमें मैंने स्टेप किया कि पहले अगर कोई डॉकर चल रहा है या कुछ हो रहा है, तो मैंने सारे इमेजेस को उठा के, जो भी रनिंग कंटेनर है उसको उठा के स्टॉप किया, रिमूव किया, क्लीन किया मेरे एनवायरनमेंट को पहले, ठीक है. एंड उसके बाद मैंने क्या किया, डॉकर रन किया है. इफ यू रिमेंबर, राइट, whenever I will run my package stuff and everything, it will create that jar or war file in which folder? Target folder, right? This folder, this is my local instance folder. I'm just mapping this volume, or you can say disk path, right, with a containers path called user local tomcat webs. So this all information you will get very much clear in the Docker session, which will come right later. But for this project I will give you certain information bit, right, so that you are aware, right, how it happens, and you can correlate when I will take a Docker session. And then we have a port mapping, which is called ingressing, right. So maybe our container Tomcat is running on 8080 port, but my instance port could be different, right. The request can come from my instance port which is mapped to this port. So if someone want to access my front end, he is not required to use 8080 port in which actual the Tomcat is running. So he will be executing over this port which is exposed on EC2 instance. So this is kind of a port mapping, right, or mapping routing to container. And this is certain command, right, name of your container is test tomcat, in which it will run, right, and your image name at the end. So when an image is executed, it becomes a container. So I am going to use this image which I builded here in the Docker build section, right. So I'm using the same image to create a container in which actual my application is, right. क्योंकि मैं वहाँ पे ही वो, क्योंकि tomcat क्या है, एक इमेज है, और वो tomcat में ऑलरेडी tomcat इंस्टॉल्ड है, मुझे इंस्टॉल करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, क्योंकि जब मैंने बिल्ड किया तो मैंने एक कंटेनर ऐसा लिया है जिसके अंदर प्री इंस्टॉल टॉमकैट आता है. बस मैं क्या कर रहा हूँ, उसके वेब एप्स फोल्डर पे अपना पैकेज्ड वॉर फाइल जो है वो डाल दे रहा हूँ, राइट, वॉल्यूम मैपिंग करके, एंड इट राइट गेट्स डिप्लॉयड इन दैट एनवायरनमेंट. सो एनी ये क्वेश्चन? टॉमकेट की टॉमकेट की जो इमेज है वो कहाँ से मिलेगी, मतलब इसको जेनकिंस से, सो फ्रॉम जैसे डॉकर हब? yes, right, currently I'm using Docker Hub, but your image can be stored in what, any inventory, or you can say registry, right. I can, when I'm maybe using Kubernetes से, right, Kubernetes का अपना registry हो सकता है जिसमें वो Docker images रखता है, ठीक है. या मैं अगर GCP पे काम कर रहा हूँ, राइट, तो GCP अपना गूगल का अपना रजिस्ट्री मेंटेन करता है, आप गिट पे रख सकते हो, राइट. अल्टीमेटली आपको करना क्या है, आपको फेच करना है ना वो इमेज रन करने So के लिए. in this case, where it is maintained, where it is located? Docker Hub. In this case, In this okay, case, Docker. for example, you are seeing this Docker build, right? Let's go to this project. There is a Docker file. You can see the name of the image. Okay. So Okay, it's a obviously, I'm Docker just file. it is a Docker file that I'm building an image right from a Docker file, and Docker file I am using a base image is what, Tomcat 8 version, and this is there where Okay. the main concept of Docker is what, how it works. Basically, Docker is a platform. Whenever you run an image, right, like Docker run image name, first it looks locally,
लोकल देखता है कि इमेज है कि नहीं सिस्टम पे। अगर उसको सिस्टम पे नहीं मिलता है, लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम पे जहाँ पे आप डॉकर आपने इंजन इंस्टॉल किया है, अगर नहीं मिलता है तब वो कहाँ इंटरेक्ट करने जाता है, अपने रजिस्ट्री के साथ, जो रजिस्ट्री आपने कॉन्फ़िगर किया है। तो ऑब्वियसली हाँ, बाय डिफॉल्ट रजिस्ट्री क्या है, डॉकर हब है। वो डॉकर हब में जाके क्या सर्च करेगा, टॉमकैट 80 को सर्च करेगा, उसको मिलेगा, उसको क्या करेगा, पुश कर देगा, मतलब it will come to my system locally which I can use it. Okay, got Prafula? Yes. Okay, perfect. Okay, now let's start doing our integration. So I will be opening my Jenkins. So I will go to my instance. Both of them are running. I have not stopped them. Okay. Jenkins. So I will copy this IP. Go to Okay, so this is my project. First, I will remove continuous integration from this project, so that if I do any commit in my Maven project, it should not trigger. So that I have to handle. I will go to this project, configure it, and remove the polysym. Just give me 1 minute, guys. So I will uncheck this polysym and I will save it. Okay, now I will create a pipeline project. So I will go to dashboard. Okay, not this dashboard. I will have to go to Jenkins dashboard. Okay. And I will create a new item. Okay, and I will create a pipeline project. And I will name it my pipeline project. Deepak, do we have any templates to create pipelines? Pre-built templates, like we get some code from for pond.xml also we get that pipelines. Sorry, the templates. Yes, we can, right? It is, you can search over internet. There are many templates present. Okay, guys, be on mute, right? I have. Let me check. Just give me 1 minute. Someone is trying to join in, but is not able to join. Let me. I will be on mute for a while.
Hey, hi, Nikhit. Nikhit, any message that you want to pass on? Okay, I will continue the session. So we are going to create what? Guys, I am audible to everyone? Yes. Perfect. So us, right, we understood from the difference between declarative and you can say scripted pipeline. Now we are going to use our declarative pipeline here. So obviously the configuration, right, have to be done somewhere. Few of the things are very similar to what we did in Maven project. Okay, so we can write a small description about the project that we are working. You can describe the project that you are using, right? So this similarly, right, if you have right restrictions, you can right put all those right definition, right, where you want to run, right, you can define here in this particular section that we already did. Here also for continuous integration we can use poll SCM. Since I removed, now I am putting here. So this is a periodic check, right? For any commit which is going to happen in my repository, it will trigger the output here. Okay. Now, this is the major important section, right? Where we are going to configure our pipeline. Now, if you see in the definition, it says pipeline script, but there are two choices. Whether you want to use from SCM or you want to copy paste your declarative pipeline here. So if it is pipeline script, means you can copy what is the content in Jenkins file here, or you can use pipeline script or SCM, then you have to integrate, right, with the repository. Now you can choose the SCM that you want to integrate with. For example, my Jenkins file is in Git. Now then you can put your repository URL. So obviously I have to go to my project, hello world Maven. Here I can right copy SSH URL. Since we are already integrated using SSH integration, we can copy it and we can paste it here. Now there is one thing that you will observe once this is done, right? I will show you that the script path that it is using is what? Jenkins file, right? And if I go to my code, and if you see the Jenkins file here, it has what? Can you read that? This is which command? This is what? Windows bat PowerShell command, right? command. हाँ. So this yeah, this is right more this pipeline is more related to the Windows machine, but our Jenkins is where in a Unix environment, right? So I had created a different file called Jenkins file Unix, and here I have sh, so I will be using this file. So my file name in my configuration should match which Jenkins file means. It is standard name is what? Jenkins file. If you want to change it, right, you can change it, but you have to specify in the script path. Okay. So I will be using the standard naming convention that I have given, right? That is Jenkins file Unix. Okay. So this is what I have done. Okay. Why n is not getting typed? Okay. Unix, and I can now apply it. Okay. Now remember, if I run it, right, we have to check few things, right? The first failure will happen because of what case? First failure will happen because of this plugin not available. So we will create that condition, right? We will see why it is failing. And second, if it is not matching this naming convention where in global tool configuration. So if you go to your Jenkins, right, I will open a new window. Okay, I will go to dashboards.
Okay, it failed. Though I didn't saved it. मैंने save किया था क्या? नहीं नहीं किया था ना, अप्लाई किया, बट फिर भी वो ट्रिगर हुआ। ठीक है, पुलिस सिम अप्लाई ने उसको राइट सेव किया, इसीलिए ट्रिगर हुआ, बट दैट्स फाइन। सो व्हाट आई वाज गोइंग टू शो यू बेसिकली द ग्लोबल टूल कॉन्फ़िगरेशन, राइट? द डैशबोर्ड, समवन इज वेटिंग। अरे why is this? Deepak, hello. हाँ हेलो। When to use declarative pipeline and when to use another one? When to use declarative pipeline and when to use a scriptive pipeline. Yeah. So have you gone through the very first part? Validation. So I described you, right? So what are the advantages of declarative pipeline over what scriptive pipeline? I told you, or scriptive pipeline comes from old school. So obviously you will always prefer what? Declarative pipeline. Okay. Okay, but if you're working in a project which is using, right, you can say the declarative pipeline, your scriptive pipeline, obviously you should have some basic knowledge. There is no much difference in terms of writing them, right? Only thing, right, in terms of some knowledge, right, what are the advanced feature, right? I told you it's much opinionated. Why? Because the things are same, pretty same, but there are certain features added which we should be aware of. For example, agent. Second example that I have given you, restart from the stage, right? Skipping a stage. And you can also explore one thing called options. Generally, let me tell you that also, since I remember. In case of right declarative pipeline, I can have options keyword, and these options, right, I can define here. Okay, so options are like आपको NC कलर देना है आपके, राइट, उसको कुछ कलरिंग देना है या कोई टाइम आउट सेट करना है, तो वो ऑप्शंस जो है आप एक ग्लोबल वे में डिफाइन कर सकते हो, ठीक है? बट नॉट इन द केस ऑफ दिस। If you want to write, for example, you want to add timestamp, so you have to inbuilt, right, entire you can say your stage inside timestamp. तो ये पूरा का पूरा टाइम स्टैम्प करके, जैसे एक ऑप्शन है टाइम स्टैम्प ऐड करने के लिए, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऑप्शन टाइम स्टैम्प डाल सकता हूँ ऐसे करके बाहर में, और उसको मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है? ये जो टाइम स्टैम्प है आप कैसा डालना चाहते हो, यहाँ पे क्या है, आपको टाइम स्टैम्प लिखना पड़ेगा। गाइस, आई विल बी ऑन म्यूट, जस्ट गिव मी 1 मिनट, ओके? Hanji, Hanji. All right, guys. Very good morning. So, Nikhat this side. I am seeing by name Tejas Khot out here. Who is the one who have joined? Tejas Khot. Nikhat, this is my Tejas. son's name. Nikhat Ranjan here. This is my son's name. So this is basically Okay. sometimes he is using my Zoom for his school online classes. So I'll change that name. I was not aware about it, so I will change that name. Yes, yes. Yeah. Just Okay. a request, guys. Just to avoid this confusion, you all join by your respective names henceforth. Okay. Yeah. All right. Okay. That is what I wanted to check. Okay. Yeah. Thank you so much.
Okay, guys, let me get started, right? Okay, so I was going to my dashboard and going to manage Jenkins. Okay, in manage Jenkins, I will go to global tool configuration. In global tool configuration, right, we will see, right, what Maven we have configured. So this is the Maven installation, and you can see my Maven installation contains dash, not underscore, right? And in Jenkins file list. So there are two failures that should happen, right? The very first failure, for example, which has happened because I saved it. For example, let me save it in this page, and it's already failed. Let's see, right, what is the failure, and you can see, right, how a pipeline diagram has also come. But let's see what the failure reason is. So let's go to console output, and you can see, right, here Java lang no such method error. Like with Maven, I told you, right, this same problem that right, generally I told you, right, if you are using a keyword which is coming from a plugin, if it's not installed, you will get this error. To resolve this error, what I will do, I will go to manage plugins, right? I will go here, dashboard, manage Jenkins, to manage plugins. Okay, I will go to available, and here I'm going to write something this which is what, Maven pipeline integration. Maven, yeah, this one you can see, right, pipeline Maven integration. So what it is saying, the plugin provide integration with pipeline, configures Maven environment to use within a pipeline job by calling sh Maven or bat Maven, right? That's what we did. The selected Maven installation will be configured and prepend to this path. मतलब हमारे इसमें configure होना चाहिए. So I will select this and install without restart. हेलो दीपक. Yes. या ये जो अभी हम लोगों ने देखा वो वैलिडेशन स्टेज पे ही फेल होना चाहिए था, राइट? इफ Obviously, प्लगइन इफ प्लगइन इज नॉट इंस्टॉल्ड, ये स्किप हुआ है ना ड्यू टू द अर्लियर फेलियर. not earlier failure, it doesn't started. जो सारे के सारे पाइपलाइन क्या हो गया, वैलिडेट किया, उसको नहीं मिला, उसने कुछ भी रन नहीं किया. ओके. कहाँ रन किया उसने, कोई कमांड रन किया क्या, sh maven compile नहीं यही दिख दिख तो रहा है. नहीं रहा. हाँ, तो ऑब्वियसली क्या हुआ, वैलिडेट हुआ, राइट. गुड ऑब्जर्वेशन दो, बट यस. यस, इट डजंट एग्जीक्यूटेड एनीथिंग. ठीक है, यस. सिर्फ एक ही चीज हुआ, अगर आप देखो, जो हमने डिफाइन नहीं किया वो उसका डिफॉल्ट बिहेवियर है. क्या डिफॉल्ट बिहेवियर है, बिकॉज ऑफ पोलेसियम क्या किया उसने, फेच किया क्या चीज, गिट आर्टिफैक्ट्स, गिट. right? But whatever I have written in stage, right, those are not executed, right? This is what the validation is. ये default है. अगर आपको स्टेज में दिखाना है तो आप फॉर नेम सेक दिखा सकते हो, ठीक है, सो दैट क्या है, जो पाइपलाइन का डिजाइन है उसमें दिखे. अगर आप यहाँ पे देखोगे पाइपलाइन का जो शेप आएगा, जो भी है ग्राफिकल, you can see, right, declarative checkout SCM, which I have not defined, right? It is what, the default behavior, but these are the stages which I defined, which doesn't get executed and marked as a failed, right, because validation failed. ओके, तो बाय डिफॉल्ट ये चेकआउट एससीएम होता ही है. Obviously, अगर आपने पोल SCM किया तो हो गई, या. है ना. Now let's go for the second error. ठीक है, अभी हम लोग ने क्या किया, ये वाला तो पाइपलाइन Maven इंटीग्रेशन तो डाल दिया, राइट. तो विथ Maven का एरर नहीं आना चाहिए. अब किसका एरर आना चाहिए, द नेमिंग कन्वेंशन. Maven वाला, है ना, जो Maven हमने Yes. किया है. तो let's Yes. build now from here, because I'm not doing any commit, so I will click here to build and see that new failure. It failed, all the stages failed. Yes. And now let's see the error logs. Now the error is something different, right? Could not find specified Maven installation. Correct? That error gone, right? Which was because of plugin.
True. Yes. Now let's correct it. Let's go to our project and let's correct it. Okay. So I will edit it, and I think we have dash instead of underscore. This is very old commit. I'm correcting. Now अभी भी ये फेल होगा. किस लिए फेल होगा अगर देखा जाए तो? इसमें डिप्लॉय स्टेज है, and let's see whether our what I would say Nexus ना, देखते हैं Nexus चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि Nexus काफी टाइम तक अगर आइडल रहता है तो बंद हो जाता है. 8081 पोर्ट पे रन हो रहा था. Nexus is a node where we want to deploy the code, right? हाँ, सो वहां पे हम अपना क्या कर रहे हैं, आर्टिफैक्ट्स स्टोर करते हैं ना. करेक्ट. इट्स काइंड ऑफ आर्टिफैक्ट सर्वर. सी अभी ये चल नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या है, टू गो टू टर्मिनल एंड इंश्योर दैट वो चल रहा है. नहीं तो क्या होगा, टाइम आउट फेलियर आएगा, है ना, और एक ही स्टेज फेल होगा. सो लेट्स गो टू टर्मिनल. दिस इज अ नेटवर्क फेलियर, तो वैलिडेशन इसको कैच नहीं कर सकता. ठीक है, क्योंकि चीजें सब सही लिखी हुई है, ओनली क्या नेटवर्क साइड से फेलियर है. कंट्रोल आर. सर्वर ही बैठा हुआ है क्या, देखते हैं. इसको रीस्टार्ट करते हैं सब. ठीक है, मीनवाइल हम लोग अपना फेलियर देखते हैं. जो भी फेलियर है वो हम सही करेंगे. तो ये बंद हो रहा है, तो ये बंद भी नहीं हुआ क्या, सक्सेसफुली स्टॉप, बट यहाँ पे कुछ एक्शन ही नहीं हुआ. टॉपिक. ठीक है, नाउ लेट्स गो टू आवर पाइपलाइन प्रोजेक्ट. ठीक है, हमने अभी क्या कर रहे थे, हम ये कमिट करने वाले थे ना, हमने यहाँ पे एडिटिंग मोड पे थे, तो मैं इसको कमिट कर देता हूँ. राइट, से फॉर एग्जांपल अपडेटिंग डिप्लॉय में फेल होना चाहिए इस बार. अपडेटिंग फॉर्म डॉट एक्सएमएल and commit changes. Jenkins file. Okay, yes, Jenkins file. ना इसको कमिट किया मैंने. ऑब्वियसली मेरा प्रोजेक्ट ऑटोमेटेड वे में ट्रिगर होना चाहिए इस बार. राइट, मुझे बिल्ड नाउ करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. लेट्स गो टू पाइपलाइन. लेट्स वेट फॉर सम टाइम. It got triggered. Now it's waiting for the quiet period, which is 5 seconds. Now it got triggered. Now if you see, right now it is in build phase. For successful build phase is successful. Let's see the logs here. So in build phase, right, it does all this stuff. Now in deploy, right, it will get definitely timeout. Yeah.
देखो यहाँ पे ये अपलोडिंग टू रिलीज में गया है और ये क्या हो जाएगा, फट जाएगा। किस दो रीजन है राइट, एक तो अभी आईपी भी चेंज हो जाएगा, मेरा तो बंद ही है, और ये थोड़ी देर में टाइम आउट करके फेल हो जाएगा। नाउ मीनवाइल लेट्स सी द सर्विस इज कमिंग अप और नॉट। Stopped. Let's start it. Sorry. अभी तक अपनी है मशीन, रनिंग तो दिखा रहा है बट आ गया। ठीक है, हमारा इंस्टॉलेशन है राइट। लेट्स sudo cd/app ओके स्पेस /app nexus bin। क्यों भाई cd कमांड नॉट फाउंड, ऐसा कैसे हो सकता है? ओके sudo के साथ cd यूज नहीं कर सकते, दैट्स ट्रू। ओके अभी इधर आ गए, ठीक है, ये नॉर्मल नेक्सस यूजर से है, ठीक है। नाउ आई विल स्टार्ट दिस बाइनरी अगेन। अगर मैं अभी PS AUX पाइप क्रैप नेक्सस करूंगा तो नहीं चल रहा होगा, ऑब्वियसली मशीन स्टार्ट हुआ है और हमने इसका रन टाइम सेट नहीं किया है राइट, init.dy वाला, तो ऑब्वियसली हमें मैनुअल स्टार्ट करना पड़ेगा। सो इट शुड रन एज अ sudo ./nexus एंड स्टार्ट, एंड बैकग्राउंड मोड में रन करने के लिए %, ठीक है, एंटर। कंट्रोल yes grep nexus कम। अभी एक sudo netstat करके पोर्ट को आप आने देते थोड़ी देर, netstat -nep pipe crap 8081। तो अभी तक 8081 अपनी आया बट नेक्सस अप आ गया है। तो अभी यहाँ पे प्रोसेस 1473 से देखते हैं, थोड़ा टाइम पे आता है वो, ठीक है। अभी उसका अपना जो TCP पोर्ट है वो आया राइट, इन वाइल वो आ जाएगा 8081 या आ गया। अभी हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, हमारा आईपी हमने कॉपी किया हुआ है, चेंज दैट आईपी वी okay, so we will check in our sign in। अभी हमने रिलीज डाला था लास्ट टाइम राइट, अभी मैं सेम रिलीज पे डालूंगा तो भी फेल होगा, है ना। तो हमें रिलीज भी चेंज करना होगा, उसका या तो वर्जन चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो it will not write right on the same right version of release, this is the right standard। तो अभी अगर हम देखेंगे अभी हमें क्या चेंज करना है, जाके pom.xml करेक्ट। अभी हेलो वर्ल्ड में जाएंगे, pom.xml अभी तक तो फेल हो गया होगा, पाइपलाइन प्रोजेक्ट हैज बीन फेल्ड, ठीक है, इसको फेल हो जाना चाहिए। फेल हो जा तो इतना देर तक टाइम आउट क्यों, टाइम आउट का पीरियड डिफाइन नहीं होगा ना, हमें टाइम आउट डिफाइन कर सकते हैं, ऑप्शंस में हम लोग टाइम आउट भी डिफाइन कर सकते हैं। तो इट इज राइट, इट विल अटेम्प्ट फॉर राइट सम टाइम एंड इट विल देन फेल। तो हम कोई नहीं, इसको अबॉर्ट कर देंगे। अभी बंद हो गया, फेल हो गया राइट, इसने कितने अटेम्प्ट मारे, 2 अटेम्प्ट राइट, 2 अटेम्प्ट करने के बाद फेल हो गया, ठीक है। और इसने देखो यहाँ पे इशू क्या दिया है, यू कैन से कनेक्शन टाइम्ड आउट राइट, कनेक्शन टाइम। नाउ लेट्स go to our pom.xml and edit it। अगर हमें रिलीज में डालना है तो हमें राइट ये वर्जन चेंज करना पड़ेगा, है ना। अगर हमें स्नैपशॉट करना है तो वी हैव टू चेंज द स्नैपशॉट, तो सेम वर्जन पे स्नैपशॉट चल जाता है बट रिलीज नहीं चलता।
तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो आईपी चेंज कर देता हूँ। और इसका वर्जन चेंज कर देता हूँ। ये मैं 2.01 करके बिल्ड करता हूँ। रिलीज पैच डाला है मैंने, ठीक है। चलो इसको कर देते हैं कमिट। I will commit the changes. When changes are committed, it is going to trigger this pipeline project. Fourth run है, and this time, right, it should be a successful one. Let's wait and let's see how it runs. Okay, trigger हो गया अपने आप, ठीक है। Build हुआ, test भी हो जाएगा। Now it's what the deploy phase. So now this time successful, right? Everything is good. Now also in our Nexus, in components, in release, you can see a new version, right? 2.01 release has been right pushed. अगर मैं वहाँ पे 2.0.0 रखता तो क्या होता? फेल होता, ठीक है। जॉब फेल होता, क्योंकि ओवरराइट नहीं करते रिलीज के केस में। बट इन केस ऑफ स्नैपशॉट फेल नहीं होता अगर स्नैपशॉट कीवर्ड होता। तो ये मतलब इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने के लिए, क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। ओके, एनी क्वेश्चन सो फार? नाउ रिमेंबर, ये तो हमने एक डिपिक्शन किया और हम एक डिपिक्शन और करेंगे। नाउ लेट मी show you one thing, right? I am also going to give you a submission project soon, right? I want to show you one interesting thing. Okay, this is a typical, right, the Jenkins project, right, in which you can see few important thing, a few important stuff that you would be interested in. And this is the project, right? Somehow I will, right, give you, right, as a submission, as a part of submission, but I will be much flexible in terms of, right, changing it as per your convenience. I know there are few things that, right, you would not be aware of. For example, Sonar, Jakaco is nothing, right? Jakaco is just like a unit test plugin. तो आपको बस ये pom.xml समझना है, वहाँ पे कैसे ये plugin यूज किया है। ये कोड कवरेज टूल है, बहुत अच्छा ग्राफ प्लॉट करेगा। आपको बस इसको कॉन्फ़िगर करने आना चाहिए, राइट? और उसका टूल का यूज केस क्या है कि कैसे है। मेन थिंग है आपको सोनार इंस्टॉलेशन, right, and configuring this, right? This is one of the important thing, right, that you have to understand. इस पे मैं एक सेशन लूंगा सोनार इंस्टॉलेशन पे, ठीक है। मैं आपको सोनार इंस्टॉलेशन करके दिखाऊंगा और आपसे मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आप ये जो प्रोजेक्ट है, राइट, इसको फुल फ्लेज रन करोगे, ठीक है। जब आप इसको पूरा रन करोगे, देन दिस इज वेरी रियल टू इंडस्ट्री, मतलब क्लोजर टू, राइट, रियल वर्ल्ड इंडस्ट्री में जो यूज होगा। आप जहाँ जाओगे तो उस तरह के पाइपलाइन आपको दिखेंगे, जहाँ पे क्वालिटी गेट चेक होगा जो सोनार की थ्रू होगा, राइट। उसके बाद पैकेजिंग होगा, and then after, right, you will do deploy using whatever, right, deployment. So this is always open because you can use any mechanism. हमने डिस्कस किया, राइट, Terraform यूज कर लिया, Ansible। जब आप Ansible Terraform यूज करोगे, you will able to know, right, how to, right, tweak this particular, right, deploy stage. जैसे अभी हमने डिप्लॉय में एक सैंपल के तौर पे देखा, तो हमने नेक्सस पे डिप्लॉय
कर दिया, राइट. सिमिलरली एक एनवायरनमेंट में डिप्लॉय करना है तो आप जनरली राइट प्रोविजनिंग टूल या कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल यूज करोगे, इंटीग्रेट करोगे डिप्लॉय सेक्शन पे. सो यू विल यूज राइट एंसिबल प्लेबुक्स और टेराफॉर्म राइट कॉन्फ़िग फाइल्स. तो उस तरीके से आप करोगे. And post is right basically in case if it is successful, it doesn't fail, right? So it will say Jenkins pipeline is successful. If it's failed due to any reason, like Jenkins pipeline, this is right post breaking or tiring right of your job. So this is a standard right keyword called post that you can use in any project. Right? Okay, so keep this right clone. I would say fork this Jenkins test for sure, and with current knowledge at least you can try right looking into this project. pom.xml में जाके देखो किस क्या चीज के लिए प्रोजेक्ट है. इट इज जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस, रिमेंबर, राइट. तो आप इसके थ्रू अपने आप को बिल्ड कर सकते हो थोड़ा. ठीक है, एनी क्वेश्चन? दीपक वो हेलो. यस, आई कैन हियर यू योगेंद्र. या वो रन टाइम हम लोगों को रिलीज या फिर वो चेंज करना था वर्जन. हाउ डू वी डू दैट? देखो वो मैंने आपको क्या बोला, आपको एक स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा. ठीक है, कहाँ गया आपको? पाइपलाइन में लिखना पड़ेगा. आपको आप पाइपलाइन में लिख सकते हो या पाइपलाइन एग्जीक्यूट करने से पहले जो pom.xml है, जैसे आप गिट जब गिट फेच करते हो ना, अभी आपको बता रहा हूँ मैं कैसे कर सकते हो. कहाँ गया मेरा जेंकिंस का प्रोजेक्ट? कहाँ गया? हाँ, ये मैं ओल्ड प्रोजेक्ट में जाता हूँ जहाँ पे मेरा शेल है. पाइपलाइन में भी कर सकते हो और पाइपलाइन के थ्रू भी बता सकता हूँ मैं, इसके थ्रू भी बता सकता हूँ. तो ये माय फर्स्ट प्रोजेक्ट है. ठीक है, इसके बाद आपका क्या है, बिल्ड नाउ हम ना कॉन्फ़िगर में राइट यहाँ पे. अभी सबसे पहले क्या हो जाएगा, जब भी आप मैवेन जब करोगे राइट, तो आपका क्या हो जाएगा, पुल हो जाएगा राइट. बेसिकली जो प्रोजेक्ट है वो पुल हो जाएगा. मैं राइट प्री जो है राइट, प्री इसमें जो भी मेरा pom.xml है प्री यहाँ पे, स्टेप्स. इसमें मैं आई कैन डू व्हाट सेड माइनस आई, है ना, वो पर्टिकुलर जो स्ट्रिंग है ना pom.xml पे, है ना, तो सब्स्टिट्यूशन मार सकता हूँ राइट. I'm not writing entire right with what you want to substitute, right? And then write the name of the file, that is pom.xml. ठीक है, ओके. तो मैं इस तरह का कुछ ऑटोमेशन लिख सकता हूँ. अगर आप पाइपलाइन के उसमें सोचोगे तो पाइपलाइन में मे बी राइट जहाँ पे मैं बिल्ड करने जा रहा हूँ ये मैवन राइट क्लीन, तो मैं पहले जो जेंकिंस फेच वाला जो स्टेप है राइट, चेकआउट स्टेप, यहाँ पे मैं जैसे ही होगा यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, सेड माइनस आई राइट pom.xml में चेंज मार दूंगा. ओके. ओके. So this way we can achieve right, or I can do something right, some more automation right before committing right my code right. I will write certain automation that before committing I should tag my code right, or right I will change my code. This is could be a manual process right in organization to do that. तो हर जगह ऑटोमेशन नहीं फिट बैठ सकता राइट, नॉट नेसेसरी. तो मैनुअल भी हो सकता है, बट अगर आप ऑटोमेट करते हैं तो कुछ इस तरह की चीजें करनी पड़ेंगी. ओके. ठीक है, ओके. ओके, एनीथिंग एल्स? सो सी maybe right I am not available tomorrow guys, just right informing. I will put in the group also. I see very less, most of have gone because of jobs. Okay. सो आई वुड से कि आप ये चीज करना, क्या बोलते हैं, मेरे को ग्रुप बनाना था. If everyone would be there right, so what I will do right, I will come tomorrow for 10-15 minutes for sure. ठीक है, मैं आ जाऊंगा. I have some right schedule activity, therefore I am right. So कल मैं आऊंगा right, if everyone joins in right, I will make a pair group, and at least right for two projects that what we have done so far, right, two we say but there are multiple things in it right. तो उसमें आपका जेंकिंस मेवन प्रोजेक्ट हो गया, नेक्सस इंटीग्रेशन हो गया और पाइपलाइन हो गया राइट. ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं
वो आपको करने होंगे, ठीक है, विद Okay. दैट स्पैन ऑफ टाइम। तो कल हम वो एक्सरसाइज करते हैं, एक तरह का लैब एग्जीक्यूशन मॉडल, राइट। सो आप ग्रुप में Yes. करोगे, एक दूसरे को आप हेल्प करते हो, कोई एक चीज करेगा, कोई एक चीज करेगा, राइट। तो Mhm. मेनली ऐसा होना चाहिए कि कोई नेक्सस इंटीग्रेट कर रहा है, ठीक है, कोई नेक्सस इंस्टॉल कर रहा है, कोई जेंकिंस इंस्टॉल कर रहा है, और कोई अपने github.com से राइट इंटीग्रेट करवा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रोजेक्ट करना, राइट। तो हम अराउंड 18 का स्ट्रेंथ है, 18-19 का ये बैच स्ट्रेंथ है। अगर उतने लोग आते हैं तो उस हिसाब से वी विल ब्रेक इनटू राइट पेयर ऑफ फाइव्स में, राइट। Okay. ठीक है, Yeah. ओके गाइस, एनीवेज हम थैंक लोगों यू। को कितने दो ही सर्वर लगने वाले हैं ना, दो EC2 इंस्टेंस लगने हाँ वाले अभी हैं तक ना, देखो, आप देखो मैंने दो ही जेनकिंस किया है, एंड नेक्सस, दैट्स इट। जेंकिंस एंड नेक्सस, हाँ। या ओके, यस, ओके, यस। थैंक यू एवरीवन। एनी मोर क्वेश्चंस? Deepak, can you please explain that Nexus part once again? So Nexus is an artifactory repository, right? If you see right diagrammatically, let me use draw.io. इसको क्लीन करना पड़ेगा सब। ओके, नाउ जनरली होता है क्या है, एक डेवलपर है ना, कोड कमिट करता है, ठीक है, और the same diagram that I have created right many times, in right, it is useful to understand. It will clear you your right. This is a say continuous build system like Jenkins. Right. This is right. This continuous build system is integrated right with many tools, right? Using either plugin or something, right? For example, आप Maven build tool use कर रहे हो, है ना? तो आप Maven से क्या कर रहे हो? Artifacts generate कर रहे हो, ठीक है? For example, ये आपका Maven हो गया, ठीक है? और just and Maven is integrated again with this Jenkins. जब आप Maven से artifact build कर रहे हो, right, using continuous build system, जो artifact generate हो रहा है, आप क्या करते हो, किसी artifactory server पे, artifactory server पे क्या करते हो, आप उसको deploy करते हो। तो ये जो artifactory server है, जैसे Maven से build हुआ continuous build से, और ये आपका मान लो artifactory server है। सर्वर है, जैसे कि एग्जांपल हमने हमने जो लर्न किया है नेक्सस, वैसे जे फ्रॉग है, ऐसे बहुत सारे हैं, राइट। आर्टिफैक्टरी इटसेल्फ एक है टूल, राइट। तो हमने नेक्सस देखा, तो आपका जो भी आर्टिफैक्ट है वो नेक्सस पे गया हुआ है। तो इसके फायदे क्या है? फायदे ये हैं, पहले तो आप जो बिल्ड कर रहे हो उसका एक तरह का एप्लीकेशन कैसे बिल्ड हुआ, किस लाइब्रेरी से बिल्ड हुआ, उसका हिस्ट्री आपने यहाँ पे रखा हुआ है ना। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2 रिलीज का हिस्ट्री रखा हुआ है ना। तो पहला एक जो रिलीज है उसमें क्या आर्टिफैक्ट्स यूज हुए, राइट, उसका जार फाइल आपका सेव है। मान लो आपका प्रोडक्शन सिस्टम में कुछ इशू आ जाता है, व्हाट यू कैन डू, यू कैन राइट रिलाई ऑन दिस, राइट, रिलीज के आर्टिफैक्ट्स पड़े हुए, यू कैन रिलाई ऑन दिस, एंड थ्रू दिस यू कैन राइट इंस्टॉल जार, रन जार, वॉट एवर यू वांट यू कैन डू, राइट। सो रोल बैक करने के लिए यूज हो सकता है। सेकेंड, ये किसके लिए और यूज हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल आपको डिबग करना है, आपने इंटरेटिव डेवलपमेंट में स्नैपशॉट बिल्ड कर रहे हो, तो एक स्नैपशॉट आपका चल गया, सेकंड स्नैपशॉट ऑफ इंटरेटिव डेवलपमेंट किया तो फट रहा है, तो आप ये वेरीफाई कर सकते हो कि भाई कौन सा लाइब्रेरी मिसिंग है, उसका वर्जन अपग्रेड हुआ है, तो वो चीज आप कर सकते हो। यू गॉट इट? हाँ समझा समझा। हाँ रोहित, या परफेक्ट। चलो हमारे पास भी एक रोहित शर्मा है, वेरी गुड। चलो एनी मोर क्वेश्चंस? या ये मल्टीपल नोड्स वाला हम लोग करने वाले हैं ना, मास्टर स्लेव लैब? वो हाँ, वो भी आप कर, वो आपका क्या है, आप लोग के लिए है असाइनमेंट, वो आप लोग को खुद से करना है,
ठीक है। Okay. अगर आपको कोई चैलेंज आता है, जो डॉक्यूमेंट मैंने शेयर किया है राइट हम्म, असाइनमेंट में, उसको फॉलो करके करना है। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज नॉट अ बिग डील, वो कोई हम्म, बड़ा ऐसे चैलेंजिंग चीज नहीं है। हम्म, इट्स मैटर ऑफ योर इंटरेस्ट। अगर आप बैठोगे राइट, किसी किसी का हो सकता है 15 मिनट्स में हो जाए, 15 टू Okay. 20 मिनट्स में हो जाए। हाँ किसी हाँ. को अगर स्ट्रगल हुआ तो हो सकता है 1-2 घंटे लगे, किसी को हो सकता है 2 या 3 दिन लग जाए। ठीक है। मतलब Okay. you would be stuck in some issue right which you are not able to identify, but at हम्म. least spend that time right for your learning. उसके बाद नहीं Okay. होता है right, let me know right, I will tell you कि कहाँ पे mistake है, क्या हुआ है। ठीक है, क्या चीज़ है, Okay. Yeah. because that is a working lab, tried and tested, done many times, so आपसे भी हो जाएगा, don't worry about it। ठीक ठीक है है। ठीक है. Yes. Okay, any further questions? No. Okay, just 2 labs right, it will right, if you do hands on right, it will add more value। okay, so Yes. जरूर करना। और कल का आई थिंक सेशन अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। ठीक है, सब आप खुद हम्म. से लैब कर पाओगे तो वो भी एक फायदे वाली चीज हो। Yes. ओके, Yes. थैंक यू Thank गाइस, you. Yes. Thank you. स्टॉप शेयरिंग।